Assalamu alaikum. So this is the second part of the previous lecture, the MCQ multiple choice question. Previously, we discussed the anatomy of the MCQ, the classification of the MCQ, as well as some advantages and disadvantages of the MCQ, which include their cost effective, their high validity and reliability. But at the same time, there are some disadvantages, and the most common disadvantage and most important one is that it's take a very high level of thinking, and it take a very huge portion of time for the construction of perfect and well structured and fine MCQs. So, yeah, now we will discuss some more types of MCQ with example, and then we will discuss the rules and pathologies and the solution for these MCQs. So, this is another MCQ discussion in which we can have some number of options in which they will known as the BCQs. BCQs stand for the best choice question. This is a type of MCQ in which almost all the options they are correct, but there is weightage of its correctfulness. Some questions, some options from the that MCQ they have high percentage of correctfulness. Some that is most accurate as compared to others. So students they are asked to identify the answer which is the out of 100% which have the high percentage for as the correctfulness. So they have to identify the most correct answer. So actually such type of MCQs which are also known as the rank order options are one best answer known as the BCQs, which mean the best choice question, mean all options are correct but identify the one which is most accurate. Like in this question, all these answers they are correct, the A, B, C, D, and E, but among all those, the B question is more accurate. So the answer which is that is the most accurate as we go to that is being the least option. It means after the B, the correct option is B, then A, then C, and the least correct answer is D. It doesn't mean that this is the wrong option, but it is least correct option than this one. This is another type of MCQ which is known as the EMQ, which we have discussed previously, which is known as the extended matching question, which are simply also known as the EM, which means the extended matching multiple choice question. EMQ that is also known as the R-type EMQ, and the single best answer question they are known as the A-type. While the true-false question is an MCQ in which the student they are asked to identify the correct option and the false option, the true and false option. So they have to write true to each option and false to each option among them. So they are actually known as the X MCQ, X-type MCQs. Which is not encouraged to have such questions, and they are not allowed as well, because each question carry 1 mark, and there is the student have to select one answer in our medical education system. So this is an example of the MCQ और इसकी anatomy जो है exactly this is the SBA MCQ की तरह है. SBA mean that is single best answer MCQ, and which there is a theme, then there is option, there is a leading question, and stem जो है ये है. सो ये सारी चीजें जो है इसमें भी इंक्लूड होती है. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसका जो सिर्फ उसका जो sequence है, all the different components of the MCQ that is much change from the A-type MCQ. Like in this example, we have the theme that is the fatigue, and then the reception. There are almost from A to N different disease. There are different condition: acute leukemia, vitamin B12 deficiency, Lyme disease, and iron deficiency. So these are the different deficiencies which can be linked to the fatigue. Then there is a lead-in component of this EMQ, which is known as for each patient with fatigue, select most likely diagnosis. Then there are different stems. There are 2 stems, N1 and 2. And after reading the stem, the student have to select the diagnosis for this vaguency from these options. This is from A to N.
the student have to select one option which is most accurate for this validity. Secondly, the student have to select and to read, initially have to read this question and then to select a best answer from these options, and the number of these steps, there may be 3, 2, 3, 4, and so on. So these are actually known as the extended matching question, and it doesn't matter what is the number of the steps here, the options that will be similar to all of them. So the student have to select the accurate answer from the given option from the different steps, unlike the multiple single A-type MCQ in which uh, there are different options for different steps. Like we have discussed them in the previous examples, that the for your stream there are different streams. There are for your stream there are different options. So in the extended matching question, there is options and then different streams that have the sharing these options, and the student have to select from. So some rules that should be kept in mind while constructing the MCQs. And the first rule, this is the known as the cover the option rule. But before going to keep in mind the cover the option rule, we have to be very specific that what we are going to ask. So for that, when we are going to prepare our question paper, including the MCQs, we should divide the paper into the specialty, that what specialty we are going to assess, that is the GIT, that is the CVS, the respiratory system, musculoskeletal system, and etc. Then we have to choose a theme from these systems. Suppose if we are going to assess the GIT, so we can select a theme from that specialty from the GIT as abdominal pain. Similarly, chest pain from the CVS and from the respiratory system. And then shoulder, that may be a theme from the musculoskeletal system. Similarly, knee pain. Similarly, we can say that the tennis elbow, the other conditions which are related to the musculoskeletal. So it means we have to initially choose our specialty, then we have to choose a theme from that, and then we have to, when we are going to construct an MCQ, that would be, so after selecting the sub theme. Let's suppose if we are going to make an MCQ from and the shoulder pain. So what we are going to ask, this is related to regarding the diagnosis of the shoulder pain. This is regarding the investigation of the shoulder pain. This is regarding the treatment of the shoulder pain. आगे जाके हम डिस्कस करेंगे ब्लूप्रिंट के बारे में। ब्लूप्रिंट से ही हमें ये अंदाजा हो सकता है कि हम पहले जो है जिस तरह जो हम एमसीक्यू बना रहे हैं, तो पहले हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमारे ऑब्जेक्टिव जो डिफरेंट लेवल्स के होते हैं वो क्या क्या होंगे, और फिर जो है हमारे यहाँ पर स्पेशलिटी क्या है, फिर हर एक स्पेशलिटी में थीम्स कितने होंगी, कौन से थीम शामिल होंगे, और हर एक थीम का फिर हम डायग्नोसिस के क्वेश्चन होंगे। Even if we are not going to include any question from the diagnosis sub-theme, so we can write 0 and under the diagnosis. And if we are going to add 2 questions from the treatment and 1 question from the investigation, so that will be 1 under the investigation and 2 under the treatment. Hence, the 3 total question will be 3 under the theme of the shoulder pain. Similarly, after these choosing the specialty, the theme, and the sub-theme, then that is easy to construct that MCQ. So what we need from the cover of remember one thing, my dear skill, the STEM is very important for an MCQ. It means if the student reads the STEM, it is very, it should be that he is able to answer the question without reading the option. सो कवर द ऑप्शन रूल का मतलब ये है कि स्टूडेंट जो है, अगर आप इसको ऑप्शन अवेलेबल भी हो, आपने क्वेश्चन इस तरह बनाया हुआ है कि कोई भी बंदा उस क्वेश्चन को रीड करने के बाद जो है उस क्वेश्चन को आंसर दे सकता है। तो ऑप्शन उसकी सिर्फ हेल्प करेंगे, उसके लिए एक ऑप्शन दे देंगे, लेकिन इट्स इजी फॉर देम समवन हु इज
reading this question should able to answer this question. So actually this is known as the covered option rule. So these are the different options for that Vignity in that leading question, that MCQ. But if someone is already known to these facts, so he can answer even if we are going to cover the option. Similarly, another good question, which is in which the cover option rule, it means if someone read this total scenario, that Vignity, and then what is the most likely diagnosis. So यहाँ पर जो इसको ऑप्शन जो है रीड करने की जरूरत जो है वो नहीं है. इट मीन हमने इस तरह के क्वेश्चन बनाने हैं कि जिसमें से स्ट्रिंग को रीड करने के बाद ऑप्शन ना भी हो तो इट इज पॉसिबल टू आंसर दैट क्वेश्चन. अनलाइक लाइक दिस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द सूडोकाउट. अब यहाँ पर देखिए, अगर ऑप्शन आप कवर कर ले, सही है, ऑप्शन को मैं कंप्लीटली कवर कर देता हूँ. अब यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट, किसी भी एक्सपर्ट बंदे को भी इवन जस्ट रीडिंग ऑफ द स्टेटमेंट जो है उससे इज पॉसिबल नहीं है कि वो बताएं कि ऑप्शन कौन सा है, बिकॉज we don't know that what are the different options. So we have to construct such question in which there should be some context, and by adding the context it will be easy for them to decide that what is the best options. So the first rule is that we should be sure, and we should be aware of this thing, that the student should answer the question without reading the option. The rule number 2 for constructing the MCQs is that we should go beyond the initial, the less difficult level. It means if we are going to assess the thinking, we are going to assess the different competencies of our students, then we should go beyond that memorizing fact. We should go beyond the remembering and the understanding level. We should go to the higher level as well. And for that, achieving that goal, we should involve difficult level question as well. So when we are constructing a paper, we are going to construct MCQs. There should be question of all level. That doesn't mean that we have to add questions which are at the analysis and then the application and the creating and synthesis as well evaluation इसकी क्वेश्चन होगी, बल्कि वहां पर जो है रिमेम्बरिंग की क्वेश्चन भी होंगी, एंड वहां पर जो है अंडरस्टैंडिंग की क्वेश्चन भी हो सकते हैं, एप्लीकेशन की, एनालिसिस की, देन द क्रिएशन एंड देन द इवैल्यूएशन. ये जो 6 सब डोमेन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, उसके डिफरेंट क्वेश्चन हो सकते हैं. सो इट मीन हमारे यहाँ पर जो नॉलेज से मुराद, दैट इज रिमेम्बरिंग, comprehension, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एंड देन द analysis, then the creation, and then the evaluation. So all these it means all these levels, they should have some question in the question paper. It means the paper should have easy question as well as it should have the difficult level question as well. Usually the questions which are related to the initial level of the cognitive domain, if they are the context free, it's okay, and usually they are the context free. But the questions which are related to the analysis, applications, and this evaluation level of that cognitive domain, then they should be context rich. Now, what is context rich? We have discussed them in detail in the previous lecture, that what we mean from the context free and the context rich question. So here we an example. There are 2 examples of the same phenomenon, same sub-theme. The first question is, what are the signs and symptoms of the multiple sclerosis? On the other hand, there is a scenario type question in which it is a 29-year-old woman has a one-day history, then different description of that present complaint history, and all about the investigation and the assessment. What is the most likely diagnosis? So we can convert this question to this question. This is the correct way of writing them, and this is the incorrect way. The sign and symptoms, they should be put in that Vignity, and then instead of asking the sign and symptoms of multiple sclerosis, it should be asked that what is the diagnosis for these sign and symptoms.
So actually, this is actually a context-free MCQ, and this is the context-rich MCQ. As we know that asking the sign and symptoms and treatment, these are the higher level. So such MCQs of the higher level of the cognitive domain, there should be a context-rich MCQ. So this is another example. We have to read that what is the best drug to treat the otitis media. अब यहाँ पर another किस तरह एक तरीका है कि उसको हम लिख सकते हैं. This is a 6-year-old boy has a 1-day history. Insert the description of the presenting of pregnancy and physical exam here. What is the most appropriate therapy? Again, the previous one was regarding the diagnosis. This one is the treatment, and these two are the questions of the higher level. So instead of asking a context-free question, this is encouraged to have some context-rich question. The objective of both questions that is similar. Here we are also going to assess the knowledge of the student about the treatment of that condition, and again here we are going to find that to assess that skills of the treatment skills, the knowledge about the treatment skills of that condition of our student. So these context-free MCQ of the higher level, they should be discouraged and they shouldn't be constructed. Instead of that, there should be a context-rich question of the higher level. What immunization should be given to adults, and instead of that, we can write this question and this way that a 30-year-old man, and then what immunization should be administered. So it means we have to describe a context of that question, and then and should then having that lead in. So it is, I think it is very clear that how we can write the MCQ of the higher level. If they are related to the low level questions, for example, what is the एक diagram दे रहते हैं और फिर कहते हैं कि what is that type of epithelium which is present in that picture, that diagram. So it's very easy. Yeah, we can ask the student from that the insertion of that muscle is. So I think there is no need of context, and if it is context free, it's okay, fine. Or if we are the example, all of the following are the example of the ball and socket joint, except so there will be an option which is not a ball and socket, and all other will be the ball and socket. So there is no need of the context for such question because these are related to the basic, the remembering type questions, and these are the low level. So if they are context free, it's okay, no problem. But if the questions are related to the investigation, it is related to differential diagnosis, if you're related to assessment, if it is related to the etiology, if it is related to the treatment and therapy and rehabilitation, and then these questions should be properly designed in a context-rich manner, like we have discussed them. So the next is how we can construct a context-rich dignity. So structure of a patient dignity, they should contain what is the age and gender of the patient. And almost every dignity of such there would आपने भी ये observe किया होगा कि मुख्तलिफ जो क्वेश्चन शुरू होते हैं तो इट मीन सपोज अ 38-year-old male 65-year-old female. So इस तरह जो है कि पहले आपने जब स्टार्ट करनी है there should be the age and gender of the any patient. Then site of care, he was present at the emergency department, he was present at the physical therapy department, he was present at the surgical department, he was present at that and that and that. So you have to identify that where he is being treated, where he is being checked. After that, describe the history, the present complaint, the chief complaint of the patient, that for which complaint he or she has been here in this clinic at this department. Then after that, have some detail of the subjective examination, and after that, some detail of the objective examination. So initially, start from the that demographic information, that who is the patient. After the introduction of the patient, the name and the address, that is not required, but the demographically, specifically the age and gender. After that,
the condition or the complaint, and then the subjective and the objective examination. And the end, a question should be asked regarding which is based on these subjective and objective examination. What is the most possible diagnosis? What is the most possible etiology? What is the most common etiology? What may be the mechanism of the injury? What is the best treatment? What is the appropriate therapy? How we can rehabilitate, and which of the following is the most accurate and most appropriate routine for the treating this patient? So it means these questions that will be also increase the difficulty, as well as it will be an accurate way of presenting such higher level MCQs. So this is actually a worksheet for writing up the Vignity MCQ for the higher level MCQ for that context-rich MCQ. So you have to mention what is the patient age and gender, then what is the chief complaint, then what is the duration, what are the different subjective examination, then the patient history after the both the subjective and as well as the examination, what I mean the objective examination, then the different investigation, then the lead-in statement, what will be, and then options set with the answer indicated A, B, C, D, and E, and it is not necessary that the answer should be 4, 5, 6. It's okay. But mostly the options they are either 4 or they are 5. And the KIM-U pattern, all the MCQs which are present in the bachelor level education system, they are containing 4 options. So actually, when you are going to construct an MCQ which is a higher level and that is a contextualized, so that is actually the format of writing such questions. So these are the clinical Vignities MCQ, and its comparison there is a basic science MCQ and the clinical Vignity MCQ. These are just the examples of this question. So it means when you are going to construct MCQ of the Vignity or that clinically MCQ, so it should contain the stem, and the stem contain all these information which we discussed previously. And then question the lead, the component of the lead in, and then there should be options. So there is some examples in the upcoming slides about the clinical Vignities and the MCQ of them. So this is the stem as the 20-year-old male soccer player presents in a physical therapy clinic with grade 2 right ankle sprain upon evaluation. What are the characteristics of a grade 2 ankle sprain? So if we look at this question, this is a low level, as it is just the question asking regarding the sign and symptom, or we can check the characteristic of the grade 2. This is just a remembering. If there is nothing about the patient, what to do with the patient, it is just that bookish knowledge. If the the student had to only recall them, again we can have that ability of these. This is another example. Again, up यहाँ पर what is the flaw, what is the mistake in this MCQ, that will be discussed later. And जैसे हम आगे जाएंगे और different flaws and mistakes, तो हर एक MCQ को देखने के बाद ही आपको डायरेक्टली अंदाजा होगा कि वहां पर इस MCQ में स्टेम में लीडिंग कंपोनेंट में ये ऑप्शन में कहाँ पर जो है ये प्रॉब्लम मौजूद है. तो हम यहाँ पे अभी सिंपल एग्जांपल्स दिखा रहे हैं, and we will come back to these MCQ the either these are okay and fine, or there is some problem. अगर problem है तो कहाँ पर problem है. So this is another example of that clinical Vignity which contain the stem, then that is the lead in, and these are the options. This is another example of such clinical Vignity, and which is the context rich MCQ. Now we are going to discuss the two basic pathologies of the MCQ, and then we will again expand those two pathologies, that what are the sub-pathologies, what are the sub-classifications of two major pathologies. So the two problems, the two pathologies which we are going to face normally in the exams, they can be summarized in these two. One is known as the content under representation, and the other is the construct irrelevance variance. अब इन दोनों को सिंपल अल्फाज में हम किस तरह जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं.
अंडर रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि जो हमें वहां पर पूछना चाहिए हमने उसको पूछा नहीं है। इट मीन कि सपोज आप सिर्फ एक सब थीम जो है यानी सिर्फ इन्वेस्टिगेशन पर आप फोकस करें एंड देयर इज नो क्वेश्चन एडेड फ्रॉम द ट्रीटमेंट, देयर इज नो क्वेश्चन फ्रॉम द रिहेबिलिटेशन, सो अगेन इट इज द अंडर रिप्रेजेंटेशन। या आपने क्वेश्चन जो है इतने कम ऐड की है, या आपने सिर्फ डिफिकल्ट लेवल अगर आपने किया है, या आपने सिंपल लो लेवल डिफिकल्टी जो है उसकी की है, तो इन तमाम सूरतों में जो है हम इसको कंटेंट अंडर रिप्रेजेंटेशन, जिसको सिंपली हम CU कहते हैं, कि जो कंटेंट यहाँ पर मौजूद है इस पेपर में वो एक स्पेसिफिक डोमेन, एक स्पेसिफिक जो है उसका सब डोमेन का फेवर कर रहा है, कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ कॉग्निटिव लेवल है। वो कॉग्निटिव लेवल में भी देयर इज ओनली द C1 C2 या C3 में के बजाय सिर्फ C1 है या सिर्फ C3 है। ऑन द अदर हैंड जो वहां पर कंस्ट्रक्ट इररिलेवेंस वेरिएबल का मतलब है कि ऐसे कुछ वेरिएबल्स व्हेन दे आर प्रेजेंट जो सिस्टमिकली जो है इंटरफेयर कर रहा हो विद स्कोरिंग की जो मीनिंगफुलनेस है या इनके इंटरप्रिटेशन। इसकी डिटेल हम आगे सोर्सेज है उस पर डिस्कस करेंगे। थोड़ा बहुत हम कंस्ट्रक्ट और CU और CAV को डिस्क्राइब करते हैं, डिफाइन करते हैं, और इसके एग्जांपल्स और सोर्सेज पर भी बात करेंगे। तो कंस्ट्रक्ट इररिलेवेंट वेरिएंस जो है which is shortly known as which is the that is the introduction of the extraneous uncontrolled variables that affects the assessment outcomes. The meaningfulness and accuracy of examination results is adversely affected. मीनिंगफुलनेस का मतलब ये है कि जिस पर्पस के लिए हम एग्जाम ले रहे हैं एक्चुअली वो जो है हमें अक्सर हमें हासिल नहीं हो पाता। And that the legitimacy of the decision made upon exam result is affected and the validity is reduced. And the most important point about the construct irrelevant variance में ये है, इसमें हम ऐसे क्वेश्चन जो है ऐड कर जाते हैं जो उसकी irrelevancy हो, यानी आप इट्स वेरी सिंपल कि जो हम वैलिडिटी का मतलब ये है कि आया जो हम कर रहे हैं क्या उस मकसद के लिए सही है जो हम हासिल करना चाहते हैं। हाँ, अगर आंसर इज यस, हाँ, तो फिर इट्स ओके, इट हैज द वैलिडिटी। लेकिन अगर हम जो है जो कर रहे हैं उससे हम वहां से नहीं कर सकेंगे जो हमारा मकसद है, तो फिर ऑब्वियसली हम कहेंगे देयर इज नो वैलिडिटी। तो मिसाल के तौर पर आप किसी इस्लामाबाद से जो है आप जा रहे हैं पेशावर की तरफ आ रहे हैं, सही है, और आप वहां पर जो है जिस बस में आप बैठ जाते हैं वो लाहौर की तरफ जा रही है। तो नाउ दिस इज नॉट द वैलिड बस बिकॉज योर ऑब्जेक्टिव इज कि योर डेस्टिनेशन इज पेशावर, और आप जिस बस में चढ़ गए हैं वहां पर जो है ये बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो एक्चुअली ये ऐसे अक्सर आ जाते हैं कि जिसमें रेलेवेंसी या कुछ इस तरह की जिसमें मीनिंगफुलनेस ऑफ द एक्यूरेसी एग्जामिनेशन रिजल्ट जो है ये इफेक्ट हो जाती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लास्ट वन है कि इस एग्जाम की जो वैलिडिटी है ये रिड्यूस हो जाती है। सो अब इसके एग्जांपल्स क्या है CIV की, या इसके सोर्सेज क्या है, कहाँ कहाँ से ये प्रॉब्लम आती है, और इसके बाद जो है वी विल आल्सो डिस्कस द अंडर रिप्रेजेंटेशन की जो है जिसमें अक्सर एक डोमेन जो है या एक कंपोनेंट जो है वो स्ट्रांगर हो जाता है स्टूडेंट्स का, जबकि दूसरा जो है वो उसकी लैकिंग आ जाती है बिकॉज देयर वाज द माल रिप्रेजेंटेशन। तो अगर हम यहाँ पर देखें उसमें के डिफरेंट जो CIV है दैट इज द कंस्ट्रक्ट इररिलेवेंस वेरिएंस की जो सोर्सेस है वो क्या क्या है। तो अगर हम यहाँ पर उसकी देखें पूरली कंस्ट्रक्टेड एग्जामिनेशन क्वेश्चन, इसका मतलब है कि अगर इस एग्जामिनेशन है और उसमें मुख्तलिफ क्वेश्चन जो है ये देयर इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चन दे हैव सम फ्लॉट आइटम्स या फ्लॉट क्वेश्चंस, तो उससे हमारे क्या होगा कि वहां पर मिसलीडिंग करेगा, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, और उसमें डिफिकल्टी क्रिएट करेगी, ज्यादा डिफिकल्टी क्रिएट करेगा स्टूडेंट्स के लिए टू पिक द करेक्ट आंसर। तो अगर जो है इवन द स्टूडेंट may have the master of that domain, जिस डोमेन को उन्होंने सही तरीके से भी पढ़ा होगा, लेकिन इस गलती की वजह से जो है उसके लिए भी मुश्किल हो जाएगा to identify the correct answer. So in this
because of this poorly constructed examination questions, some flawed MCQs, they may be the component of the paper, and these flawed items, these flawed questions, they are more likely to produce those false negatives, or the students who failed the examination, but they should not have been failed. Kyunki they are well prepared, but just because of the flawed MCQ, they are unable to achieve those high marks, और वो जो है वो fail category में आ जाते हैं. This is another test wiseness. This is the another source which will create the CIV, which will lead to the CIV. Test wiseness, which mean there are some questions, there are some tricks in the question, and some students they may have to identify and they understand that tricks in the question, while others they don't understand and don't identify. So even if they are prepared and they have worked for that, because of that trick, they are unable and they're just confused, and they will lead to the confusion. Again, जो है test awareness जो है, because the test wise student they can use the flaws in that structure of question to arrive at the correct answer without knowing anything about the content upon which the question is based. So it means sometimes that may lead to the next, which means the guessing. Which means the guessing when the question the STEM is unable to understand and it is irrelevant. So then obviously the student have to attempt and he to select one question. So he just guess the correct answer, and again it will lead to the validity of the. अगर इस स्टूडेंट का जो गेस ठीक हो जाता है तो वी विल कंसिडर दैट दिस इज अ वेरी वाइज स्टूडेंट, ये एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है, हालांकि उसका जो वहां पर उनकी मार्किंग या उसकी जो हाई ग्रेड्स आ गए हैं दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द गेसिंग. तो इसमें हमारे टेस्ट का मतलब ये होता है हम इसमें अच्छे और बुरे स्टूडेंट्स का जो है वो आइडेंटिफिकेशन करें. और अगर ऐसे एमसीक्यूज हमने दी हैं जिसमें they are unable to understand relevancy वहां पर है इस तरह और kissing ज्यादा आ गई है, तो obviously that's why such type of MCQs they may lead to the at we can say that the biasness in the results, because ऐसे स्टूडेंट जो है जिनकी गिसिंग अच्छी होती है they have the गिसिंग है इस तरह की, या वी कैन से दैट आगे जो है हम अभी डिस्कस करेंगे कि इरेगुलरिटीज आ जाते हैं जिसकी वजह से जो हमारा मकसद है कि हम अच्छे और लाइक स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई कर सके हासिल नहीं होता, और लो लेवल जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी अच्छे मार्क्स ले जाते हैं. सो द नेक्स्ट इज द आइटम बाइस. आइटम बाइस का मतलब ये होता है कि इसमें ऐसे फ्लड एमसीक्यूज शामिल हो जाते हैं, और ये कौन सी फ्लड है, ये अंडर रिप्रेजेंटेशन भी हो सकती हैं, इसमें टू लॉन्ग ऑप्शंस आ जाते हैं, इसमें से टू शॉर्ट स्टेम आ जाती हैं, इसमें से जो एब्रिविएशन आप इस तरह यूज करते हैं जो स्टूडेंट्स की समझ में नहीं आती है, या इतनी कॉम्प्लेक्स आप उसको बना लेते हैं कि जो उसको समझ में, तो ये सारी चीजें जो है ओवरऑल एक अम्ब्रेला टर्म जो इसके यूज होती है द बाइस्ड आइटम. तो ये जितने भी 22 आइटम ज्यादा होंगी उतनी ही जो है हमारी वैलिडिटी यानी जो ऑब्जेक्टिव है टेस्ट का ये जो है हम हासिल नहीं कर सकेंगे. अच्छा, द नेक्स्ट इज द इनडिफरेंशिएबल पासिंग स्कोर. अच्छा, आपने सपोज 100 मार्क्स का पेपर है और आपने ये ऑलरेडी किया हुआ है कि 90 इज द पासिंग स्कोर. आप उसमें से शायद 30 students they are going to be appear in the exam, maybe 1 or 2 just took 92, 93, 94 इस तरह मार्क. तो आप कोई बंदा कहे कि भाई इस टीचर के टीचिंग में दर्जे में फ्लॉज हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है 30 में सिर्फ 1 या 2 स्टूडेंट जो है ये पास हो गए, इसीलिए समटाइम्स टीचर जो है इतना पासिंग स्कोर रख देता है कि जिसकी वजह से जो क्लास रिजल्ट है ये बाइस्ड हो जाता है. एंड दिस इज एक्चुअली द मोस्ट कॉमन की एंड जिस तरह के अगर आप देख ले बाज यूनिवर्सिटीज जो है वो 50% पासिंग स्कोर दे लेते हैं, बाज 60% दे लेते हैं, बाज जो है जो डिफरेंट बैचलर्स आर्ट्स मजामीन होते हैं जो डिफरेंट बैचलर आर्ट्स होते हैं मास्टर आर्ट्स उसमें 33% इवन होती है. बट लेकिन अगर हम हायर जो कंपटीशन जो एग्जामिनेशन होते हैं कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वहां पर फिर 70% पर भी चले जाते हैं, 75% पर चले जाते हैं. तो इट मीन अगर आप
अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए एग्जाम बना रहे हैं और अगर आप फिर जो है पोस्ट ग्रेजुएट के लिए बना रहे हैं, so there should be different passing score for all of them, or there should be the different the level of MCQs. Sometimes इस तरह हम करते हैं कि हम अपनी लेवल को देखते हुए MCQs बना लेते हैं, तो they are very good MCQs, but ये इतनी जो है मुश्किल हो जाते हैं कि वो जो अंडर ग्रेजुएट लेवल उसके लिए ये हाई लेवल के हो जाते हैं. So actually again this is one of the item bias, उसमें से bias item जो है ये आ जाते हैं. And sometimes इस तरह भी हो जाता है कि bias item में कि हम जो एक चीज को सिंपल वे में या हम उसको समराइज कर देते हैं और फिर जब एग्जाम में हम उससे बहुत ज्यादा पोर्शन लेके आते हैं, so obviously student have to confuse in that, so that will lead to the construct irrelevance variance. The last one, which is the testing irregularities, simple mean cheating. कि cheating जो होती है that will also lead to the CIB, and this is actually पेपर आप जितना भी गुड डिजाइन का बना ले, जितना भी आप जो है वहां पर प्रॉपर परफेक्ट कोशिश करें कि अच्छे MCQs हो विदाउट एनी फ्लॉज एंड फ्लॉलेस MCQs बनाए, लेकिन इफ there is irregularities during the conduction of that exam, so again the validity of that exam will be reduced. Again the students, the objective which we want to achieve will be, if we achieve that, that will be biased and there will be huge chances of the false negatives and as well as the false positives. The other biggest pathology, common pathology of the MCQ, this is the construct under representation. Construct under representation, as we summarized in the previous slide, it means that the contents, they are not reflective of that relevant knowledge. It means we are going to favor a single domain. It means that we have all the questions, they are the low level, there is no difficult level. It means that all the questions, they are the difficult level. So it means जो presentation है यहाँ पर इस test की, this is the under representation, and different जो उसके sources हैं या example है कि क्या क्या जो है ये कंस्ट्रक्ट अंडर रिप्रेजेंटेशन जो है दे सकते हैं. तो सबसे पहले उसमें जो है द ट्रिवियल कंटेंट है. अब ट्रिवियल कंटेंट का मतलब ये है, द वर्ड ट्रिवियल सिंपल मीन लिटिल वैल्यू और इम्पोर्टेंस. तो हम इसमें ऐसे MCQs दे देते हैं जो उस जो कंपेटेंसी हम चेक करना चाहते हैं या जो थीम हम चेक करना चाहते हैं, उस थीम के देखते हुए वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती, उसकी इतनी रेलिवेंट नहीं होती, तो उसकी वजह से जो अनइम्पोर्टेंट या लेस इम्पोर्टेंट जो है कंटेंट्स आ जाते हैं. सो अगेन इट विल लीड टू द माल रिप्रेजेंटेशन. सिमिलरली जो रोट मेमोराइजेशन है, इसका एक मतलब ये है कि जो हम सिंपल उर्दू में इसको कहते हैं रट्टा लगाना. तो ये एक वन ऑफ द बिगेस्ट है कि हाउ वी कैन change this rote memorization concept by putting the context rich MCQs. अगर हम context free MCQs दे दे, that will be directly from the content which they have studied. So if उन्हें अगर रट्टा लगाया हुआ, they would simply जो है उसको हल कर सकेंगे. But if we have that context rich MCQ again, so it means हमने पहले जो यहाँ पर कहा कि जो कंपैरिजन हम कर रहे थे between the context rich and context free, why there is the inaccurate way. The reason is that this is not the best is not the best way to assess the competencies of the patient. So there should be scenarios change होने चाहिए यहाँ पर. और इसमें फायदा ये होगा कि वो critical thinking, अपने thinking use करेगी. What they have learned, they will utilize them rather than just memorizing the content in the book, content in the slides, and then they will again, if they are appear to the exam with the same content. और अक्सर टीचर इस तरह करते हैं कि स्लाइड में से कुछ कंटेंट्स देते हैं, उसमें से एक पॉइंट जो है उसको पेन इन द ब्लैंक बना लेते हैं, फिर नीचे जो है उसके अल्टरनेटिव्स ऑप्शन दे देते हैं. Though this is not a bad idea, but if all the questions they are in the same, and then again we will promote this rote memorization, and there will be a biased assessment of our students. So it means
we should have some questions which will discourage this mood of learning, which is equally known as the rote learning. The next one is the few examination item. If you are going to check the assessment, there should be a proper number of questions. If you add 10 questions or 20 questions, so I think that that will not cover all the themes of the content which they have been. So it means the higher the number of questions, higher is the chances of covering the more and more themes. So that's why if there are a few examination items, they will lead to the that construct underrepresentation. And it means they will have some contents and they will cover some themes, and they will be uncovering, and they will be not involvement of the many themes. Again, it will lead to the underrepresentation of that question. The next is the maldistribution of item. The maldistribution of examination item that actually leads to the oversampling of some content areas and sometimes the undersampling of the some questions. So that again should be avoided because there should be a clear all contents, and there should be the best solution to all these to have to manage these pathologies, sub pathologies. That is the blueprint. What is the blueprint? That is upcoming in the next slide, that how we can manage and treat these pathologies. The next is teaching to test. What we mean from teaching to test? Teaching to test एक मेथोडोलॉजी होती है कि जिसमें टीचर वही पढ़ा लेता है जो टेस्ट में लेके आएंगे, यानी जो क्वेश्चंस और टेस्ट में लेके आता है उस टेस्ट उस क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस कर देता है. सो अगेन जो है उससे वो जो कंस्ट्रक्शन ऑफ द एमसीक्यू उससे जो अंडर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, बिकॉज वहां पर जो कंटेंट्स पढ़ाया जाता है उसमें जो सिर्फ वो पढ़ाता है जो टेस्ट में लेके आता है. समटाइम टीचर इस तरह भी करते हैं, सो व्हिच इज द रॉन्ग प्रैक्टिस, इट शुड बी डिवाइडेड. The best management for all these flaws, for all these pathologies of the MCQ, this is the blueprint. Blueprint MCQ का क्या मतलब है कि before going to construct the paper, before going to construct the MCQs, the teachers should make a table which is known as the blueprint of the MCQs. Suppose यहाँ पर जो जनरल सा एक टेबल है आपके सामने कि जिसमें से ऑब्जेक्टिव 1 यानी दिस इज द एक टीम, दिस इज द सेकंड टीम, थर्ड टीम, फोर्थ टीम, और फिर इसमें से कितना परसेंटेज जो है आप इनसे देंगे, 30%, 20%, 15, 20, 10. दिस इज द टोटल परसेंटेज ऑफ द टेस्ट. तो इट मीन आप जो है हर एक वेटेज के लिहाज से हर एक जितनी भी आपकी टीम्स हैं, चाहे आपके 5 टीम्स है, चाहे आपकी टीम से मुराद आप ये भी ले सकते हैं कि चैप्टर्स नेम आप दे सकते हैं, यूनिट नेम आप दे सकते हैं, पैथोलॉजीज अगर आपने दी हैं, सिस्टम अगर आपने पढ़ाए हैं, अगर आपने रीजन्स पढ़ाए हैं तो हर एक रीजन्स को आप जो है कुछ ना कुछ वेटेज दे दें. जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर फिजियोलॉजी पढ़ा रहे हैं और फिजियोलॉजी में आप थर्ड सेमेस्टर है बेसिक या इस तरह की जो सेकंड ईयर में आप पढ़ा रहे हैं और वहाँ पर आप रीनल फिजियोलॉजी है, रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी है एंड न्यूरो फिजियोलॉजी, तो अंडर रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये होगा कि उसमें से 90% जो है सिर्फ न्यूरो फिजियोलॉजी की हो और 5% या रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी की हो या 8% रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी की हो, 2% सिर्फ रीनल फिजियोलॉजी की. So it is again an example of the under representation जो अक्सर एग्जाम में होता है. तो इसका बेहतर सोल्यूशन क्या है कि आप इस तरह करेंगे पहले से कि भाई 50% चूंकि न्यूरो फिजियोलॉजी कंटेंट ज्यादा है तो 50% मैं उनको दे दूंगा, 25% टू द रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी एंड 25% टू द दैट रीनल फिजियोलॉजी. अब इसका मतलब ये है कि जितनी भी सपोज 70 क्वेश्चंस हैं तो उन 70 क्वेश्चन में से न्यूरो फिजियोलॉजी की 50% यानी 35 क्वेश्चन जो है ये होंगे न्यूरो फिजियोलॉजी की. बाकी जो 35 क्वेश्चन उनमें से आधे क्वेश्चन जो है यानी 50 ऑफ द रिमेनिंग 50% जो है उसमें 25% यानी almost we can say that 16 are the 17 questions that would be for the renal physiology and the 17 are the 16 that would be for the reproductive physiology. उसके बाद जो है आपने हर एक टीम को
यानी से आप इवन स्पेशलिटी को आपने ये क्वेश्चन दी है, फिर उसमें से आप डिफरेंट लेवल्स क्वेश्चन देंगे, उसमें से आप लो लेवल क्वेश्चन देंगे। सपोज आपने न्यूरोफिजियोलॉजी, सो नर्वस सिस्टम की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में कि व्हाट आर द हाउ मेनी लोब्स आर देयर इन द ह्यूमन ब्रेन, वी कैन से दैट द लिटिल ब्रेन किसको कहा जाता है। इस तरह के डिफरेंट एमसीक्यू जो कंटेक्स्ट फ्री एंड लो लेवल के होते हैं, जो बेसिकली देयर नॉलेज रिलेटेड होते हैं, या हाउ मेनी परसेंटेज जो सेरेबेलम हैविंग टोटल ब्रेन परसेंटेज का कितना हिस्सा जो सेरेबेलम बना लेता है, दैट इज सिंपली द नॉलेज की क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ से आपने जो स्पेशलिटी बनाई है, स्पेशलिटी के बाद आपने थीम बनाई है। अच्छा, फिर थीम पे मुराद क्या है? आप न्यूरोफिजियोलॉजी जो है आपने उसको 50% दिया है। आप इसमें से आप इसको सपोज आपके पास 10 टॉपिक या 10 लेक्चर है, तो हर एक लेक्चर के ऊपर आपने कितने परसेंट देनी है? 5%। अब 5% की उसमें फिर आपने सब थीम्स बनाने हैं, किसमें से आप मैंने किस किस कार्नर को टच करना है। जो पेपर एट द एंड बनेगा, तो उसमें से स्टूडेंट्स को ये पहले से आप बताएंगे, ये जो ब्लूप्रिंट है ये रिवील कर सकते हैं। इसमें इस तरह नहीं है कि आप जो है इसको अपनी पास रखेंगे। ये स्टूडेंट्स के लिए ही होता है, बिकॉज दे हैव टू प्रिपेयर देयर सेल्फ रिगार्डिंग दिस कि हाउ मेनी वेटेज जो है इस सब्जेक्ट को दिए, इस टॉपिक को दिए, हाउ मेनी वेटेज टू दैट टॉपिक। तो उसके और पेपर जो है फिर वाकई जो है इसी वेटेज और इसी के बारे में फिर जो है बनानी चाहिए। तो फिर यहाँ से हर एक सब थीम जो है उसको फिर मैं अपने कुछ एक क्वेश्चन का नॉलेज का कन्वर्सेशन का, दिस इज द C1, दिस इज द C2, दिस इज द C3। और फिर इसमें से आप टोटल क्वेश्चन जो है बनेंगे। सपोज एक सब स्पेशलिटी जो है या सब थीम जो है, इसके डिफरेंट क्वेश्चन जो होंगे उनमें एक नॉलेज की भी होंगे, कंप्रेशन की भी होंगी, एंड उसकी एप्लीकेशन की भी होंगी। इस तरह फिर यही जो है नॉलेज कंप्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ ऑल द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट टॉपिक। तो यहाँ पर डिफरेंट क्वेश्चन जो आप बना रहे हैं, सपोज यहाँ पर इन क्वेश्चन की तादाद अगर हम देखें जैसे 60, तो इन 60 क्वेश्चन में से जो है 31 जो है एप्लीकेशन के होंगे, 15 क्वेश्चन दे आर द कंप्रीहेंशन, एंड 14 क्वेश्चन दे आर द नॉलेज के हैं। अब इन जो 31 क्वेश्चन में जिसमें हमने हायर लेवल, इट मीन हायर लेवल है, ये दोनों जो है वी कैन से दैट दिस इज द एवरेज लेवल, दिस इज द लोअर लेवल डिफिकल्टी है। तो इसमें हमने अगर देखी, इसमें इस हायर लेवल की ऑब्जेक्टिव 1 की भी होंगी, 2 की, 3 की, 4 की, हर एक की क्वेश्चन उसमें होंगी। इस तरह की टेबल बनाने से एक तो जो अंडर कंस्ट्रक्शन जो अंडर रिप्रेजेंटेशन है या कंस्ट्रक्ट जो एरोलिंगस वेरिएंस है, इनमें जितनी भी बायसनेस आ जाती है या जितनी भी प्रॉब्लम के साथ तक जो है वो कवर हो जाएंगे। So basically, it is a very important method है for the construction of MCQs. We should have the blueprint of the MCQs. और बहुत सारे टीचर्स जो है there is lacking of this practice, यानी वो blueprint या तो इनका blueprint of the MCQ के बारे में पता नहीं है, या उनको जो है पता है लेकिन टाइम नहीं है। टाइम है भी तो उनकी प्रायोरिटी नहीं समझती, यानी जिस तरह हम कहते हैं कि भाई नॉलेज, एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस, या नॉलेज है कि नहीं है, वो इसको मानते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस को नहीं, दैट इज द एटीट्यूड, एंड प्रैक्टिस प्योर करते हैं कि नहीं करती। तो ब्लूप्रिंट और एमसीक्यूज अगर एक बंदा नहीं करता, तो या तो इसको एटीट्यूड में प्रॉब्लम है कि भाई इसको इसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझता, इसको इसकी जो वैल्यू है उसको ये नहीं समझता कि ये इसके कुछ फायदे हैं, दैट्स वाई उसको पता है कि क्या है ये, लेकिन वो इसको नहीं मानता, दैट्स वाई वो प्रैक्टिस नहीं करता। या एक बंदा प्रैक्टिस नहीं करता तो उसका ये भी हो सकता है कि द पर्सन डोंट हैव द नॉलेज। इस सीएचपी में इस सेशन का एक यही है कि आप तो कम से कम नॉलेज होनी चाहिए। अब अगर आप देखिए ब्लूम टेक्सोनॉमी, अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं है, सो यू कैन कंस्ट्रक्ट द ब्लूप्रिंट। सो इसलिए एक टीचर जो है अगर उसको ब्लूप्रिंट बनानी है, सो ही शुड हैव द नॉलेज ऑफ द ब्लूम टेक्सोनॉमी, that what we mean from the knowledge, what we mean from the comprehension, what we mean from the application analysis. So if the teacher have that info of the C1, C2, P1, P2, then he can be able, she can be able to construct all these the questions and this table, which mean the blueprint of the MCQs. So we have to be very wise, and we have to be very careful while the construction of these MCQs. We have to avoid the content under representation of the different MCQs.
This is another example, a typical, a real example of the blueprint for the renal course at the University of the Calgary, which is a university in the Canada. यहाँ पर आप देखिए तो these are the different objectives, or we can say that the specialties are, हम इसको themes कह सकते हैं. तो specialty तो हमारी ये हो गई कि renal physiology, and this is renal जो उसकी जो current course है. These are in the different themes जो है, these all are related to the renal. फिर उसमें देखिए कि इसमें वेटेज उन्होंने कितना दिया है, फिर उसमें टोटल नंबर ऑफ आइटम्स क्वेश्चन कितनी होंगी, डायग्नोसिस के कितने होंगी, इन्वेस्टिगेशन के कितने होंगी, ट्रीटमेंट की कितनी होगी, एंड बेसिक साइंसेस की कितनी होगी. सही. अब यहाँ से लेके टोटल क्वेश्चन कितने हैं, दे आर 60. उन्होंने हर एक को कुछ ना कुछ पोर्शन दिया है. बास को 1.5, बास को 4.6, बास को 6 दिया है. सो 3, 2, 4, बास को बिल्कुल एक एमसीक्यू दिया है, बास को जो है, यानी हर एक को कुछ ना कुछ पोर्शन उन्होंने यहाँ पर दिया, और उसने वेटेज के बेसिस पर, यानी जो परसेंटेज उन्होंने ये बनाई. फिर इसमें 1.5 का मतलब ये है कि टोटल एमसीक्यूज जो है ये 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है. यानी 1.5 का मतलब ये है कि दैट मे बी 2, दैट मे बी 1. जिस तरह अगर हम कहें कि इसमें 6.75, इसका मतलब ये कि ये 7 भी हो सकते हैं या ये 6 भी हो सकते हैं. जैसे अगर हम काउंट करें तो दिस इज 3, 1, 4, 2, 6 एंड 1, टोटल क्वेश्चन 7 हो जाते हैं. तो यहाँ पर जो 60 टोटल क्वेश्चंस है, दे हैव डिवाइडेड, उसमें से 34 डायग्नोसिस के होंगे, 6 जो है इन्वेस्टिगेशन के होंगे, 12 ट्रीटमेंट के होंगे, एंड 8 जो है दैट विल बी बेसिक साइंसेस. और इसमें देखिए किसी जो अगर ट्रीटमेंट के बारे में पहला जो हाइपर ये क्या लेके है नेट्रीमिया जो है, इसमें नजर नहीं आया थोड़ा सा, इसलिए इसमें अगर या हम एसिडोसिस अल्कलोसिस भी देखें तो इसमें वहां पर देखिए इन्वेस्टिगेशन में 0, इट मीन there will be no MCQs regarding the investigation of these two conditions. So स्टूडेंट जो है इसी के रिलेटेड जो है अपना एग्जाम तैयारी करेंगे, तो इसी तरह का प्रैक्टिस जो है ये होना चाहिए. So that was all about the blueprint. Inshallah, in the next lecture, in the next upcoming sessions, we will discuss the different flaws which while construction of the MCQs may be relating to the test biasness and related to the irrelevant difficulty. So that was all about the different pathologies of the MCQ, as well as how we can manage the different MCQs. I think that will be much clear to all of you.